हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कायदे की बात। आज मैं बात करने वाला हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में, जिसे पॉपुलरली ESOPs भी बुलाया जाता है। तो ESOP देने के तीन मेन रीजन रहते हैं कंपनी के पास। फर्स्ट रीजन इज रिटेनिंग द एम्प्लॉइज, सेकंड थिंग इज अट्रैक्टिंग गुड टैलेंटेड एम्प्लॉइज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्रिएटिंग बिलोंगिंगनेस एंड द सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग द एम्प्लॉय। सो हाउ दिस ESOP इज डन? ESOP स्टार्ट्स विद प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो ये स्कीम ड्रॉ करनी पड़ती है। इसमें चार इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। फर्स्ट important factor is drawing down the valuation of the company. Second important factor is preparing the list of employees who are eligible for this ESOP. Third thing, identifying the vesting period, and last is identifying the lock-in period. So how it is done, let us understand step by step. First of all, grant date is fixed. Grant date is the date on which employees become eligible to participate in the ESOP program. इसमें employees उनके कैटेगरी के हिसाब से जो employees का स्कीम डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है वो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबल हो जाते हैं ESOP प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी डेट पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपका वेस्टिंग पीरियड क्या रहेगा, आपका एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगा। वेस्टिंग पीरियड ये वो पीरियड है जो मिनिमम पीरियड है जिसमें एम्प्लॉय कंपनी के साथ होना जरूरी है इन ऑर्डर टू ही बीइंग एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ESOP प्रोग्राम। तो कंपनी बोल सकती है कि भाई अगर आपको हमारे कंपनी के ESOP प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आप मिनिमम कंपनी के साथ 2 साल होना जरूरी है एज द एम्प्लॉय, सो दैट विल बिकम योर वेस्टिंग पीरियड. Exercise price is the price at which employee can subscribe the shares of the company, which is usually the discounted price as compared to the company's fair market value of shares. Sometimes company can also give ESOP for free of cost also. Third important part is the date on which they become eligible to subscribe the shares, which is also called as the vesting date. Vesting date is the date on which vesting period comes to an end and employee can exercise the right of purchasing the shares of the company. The date on which the employee purchases the shares of the company is called as the exercise date. Exercise date पे employee actual में कंपनी की ESOP स्कीम के हिसाब से जो शेयर्स इशू किए गए हैं उसे परचेस कर लेता है और वहीं से कंपनी का ESOP स्कीम का लॉक इन पीरियड चालू हो जाता है। लॉक इन पीरियड इज द पीरियड फॉर विच द एम्प्लॉई विल नॉट बी एबल टू सेल द शेयर्स विच ही हैज परचेस्ड इन द ESOP program. This is the minimum period for which he will have to keep the shares with him. He will not be able to sell the shares to anybody. Once the lock-in period is over, he is free to sell the shares to anyone. There is one more important date, that is the expiry date. Expiry date वो है कि जिसके पहले कंपनी के एम्प्लॉय ने शेयर्स को सब्सक्राइब करना, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज इज नॉट डन बिफोर दैट डेट, द ऑप्शन विल गेट एक्सपायर्ड. So what is the important timeline in this? Let us summarize. First is the grant date, grant of the option. Second is the vesting period. It's a minimum period for which option will remain not exercisable by the employee. Exercise date is the date on which the employee actually exercises the option. Lock-in period is the period for which the shares will remain with the employee. He will not be able to sell the share. And last is the expiry date. That is the date on which option is expired. Please share this video to the company, to the startup who are planning to give ESOPs to their employees, and follow Kaide Ki Baat for such wonderful information. Thank you.